अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज से माशाल्लाह से हम जो है इंग्लिश 1 का जो है ना आगाज़ करेंगे लेक्चर्स का, और इसमें ये हमारा 9th का इंग्लिश 1 का लेक्चर है। पहला समरी है, समरी फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। समरी फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। फिर जो है ना इसके बाद है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए समरी होगी। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत रीजनेबल, बहुत अच्छी समरी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है। आम बुक से, आम नोट से, कोटेशंस याद करने से जो है ना कम से कम 70+ मार्क्स तक चले जाते हैं बच्चे 75 में से। इसके अलावा बेटे याद रखें कि हम मेरे और भी चैनल्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ जो है उनके लिंक दिया हुआ है। जो वी का निशान है उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको भी देखें और उनको भी सब्सक्राइब करें। पहली समरी है हमारी 9th की इंग्लिश की एक की जो है पहली समरी है, यूनिट है ये 5, डैफोडिल्स, गुले नरगस, नरगस के फूल। The beautiful poem Daffodils is written by डी का, डैफोडिल्स का जो यहाँ पर बेटे डी कैपिटल आएगा। डैफोडिल्स इज रिटन बाय अ फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये खूबसूरत नज़म विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, मशहूर शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। हिज पोएट्री डिस्क्राइब्स हिज सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। ये इसकी शायरी, उसकी शायरी उसके जज्बात और एहसासात को जाहिर करती है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। इस नज़म में शायर अपनी ज़िंदगी के खुशगवार तजर्बे को बयान करता है। ही इज़ राइटली कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। वो कुदरत का शायर भी कहलाता है। एज इट इज़ वाइजली सेड, जैसे कि कहा जाता है, नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड। One day when the poet was wandering है WA से, wandering है घूमना फिरना, मटर गश्त करना, आवारागर्दी करना। At once he saw a host of golden daffodils। अचानक ही जब एक दिन शायर घूम फिर रहा था तो अचानक ही उसने सुनहरी गुले नरगस के फूल देखे। These flowers were under the trees beside the lake। ये फूल दरख्तों के नीचे थे और झील के साथ थे। They were dancing joyfully in the cool breeze। वो खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता वो हिल रहे थे, डांस कर रहे थे। As it is rightly said, where flowers degenerate, man cannot live। जहाँ फूल खत्म हो जाते हैं इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता। The waves in the lake also seem to be dancing happily with the daffodils। झील में लहरें भी जो है वो नाच रही थी खुशी के साथ, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर था। the sight नजारा, मंजर। The sight of beautiful flowers gave the poet a wealth of joy and pleasure। इस नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे ने, फूलों के इस खूबसूरत नज़ारे ने शायर को बहुत ज्यादा खुशी और दौलत अता की, खुशी की दौलत अता की। As it is rightly said, a thing of a beauty is joy forever। देखिए क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं। The flowers were so enchanting and awe inspiring। मशहूर कुन थे और माइल करने वाले थे। The poet was compelled to look at them and preserve them in his memory। शायर को मजबूर, शायर फूलों की खूबसूरती ने शायर को मजबूर किया कि वो उन्हें देखे और उन्हें अपनी याददाश्त में, प्रिजर्व होता है महफूज करना, महफूज कर ले। He collected the pleasant memories which would
continue to delight him forever. उसने बहुत ही खुशगवार यादों को इकट्ठा किया और जो उसे आइंदा पूरी जिंदगी जो है खुशी मुहैया करती रहेंगी. As it is wisely said, look deep into nature and then you will understand everything better. Now the poet describes, अब शायर बयान करता है, that daffodils have become a permanent source of pleasure for him. Whenever he sits alone on the couch in vacant and pensive mood, जब कभी भी वो खाली खुली जहन के साथ, अफसुर्दा और खाली खुली जहन के साथ वो अपने काउच होता है सोफा, बगैर बाजुओं के सोफा पर बैठता लेटता है, the beautiful scene of those beautiful daffodils comes in his mind, and his heart fills with pleasure. उसके ज़हन में आते हैं, उस नज़ारा आता है, मंजर आता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है. As he has said, in vacant or pensive mood, they flash upon that inward eyes, which is the bliss of solitude. The main theme of the poem is that objects of nature give double pleasure to man. नज़म का खास मौजू ये है कि कुदरत का जो चीज़ें हैं वो इंसान को दो खुशियाँ देती हैं, दो तरह से खुशियाँ देते हैं. फर्स्टली व्हेन ही सीज देम, जब वो उन्हें देखता है, एंड सेकंडली व्हेन ही रिकॉल्स देम, जब वो उन्हें याद करता है. स्टडी नेचर, लव नेचर, स्टे क्लोज टू नेचर. नेक्स्ट है समरी फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है. This beautiful poem, the beautiful poem about the nature named Daffodils, is created by a lovely and famous poet of the time, William Wordsworth. He is a poet of nature. His poetry describes the sentiments and emotions. Whether he hears the songs of cuckoo or sees a host of daffodils, the images he gets give him pleasure. In this poem, the poet describes the pleasant experience of his life. As Henry David has rightly said, आपने नाम कभी भी नहीं लिखना किसी का, as it is wisely said ही लिखना है. I believe that there is a subtle magnetism in nature. मकनातीसियत, magnetism से मुराद है मकनातीसियत कुदरत में, which if we unconsciously yield पैदा करना to it will direct us right. One day when the poet was wandering, at once he saw a host of daffodils. These daffodils were under the trees beside the lake. They were fluttering and dancing joyfully in the breeze. The poet could not imagine to see such a large number of flowers at a glance. As it is rightly said, if we could see the miracle of a single flower clearly, our whole life would be a happy one. The waves in the lake also seemed to be dancing happily with the daffodils. The sight of attractive flowers gave the poet the wealth of pleasure and joy. He was extremely happy in this jocund company. Jocund होता है खुशबाश, ये पोएम का लफ्ज है, पोएम के अंदर से है. As it is rightly said, where flowers degenerate, man cannot live. The poet kept looking at them and preserved them in his memory. At that time, he was unaware that he was collecting a treasure of pleasant memories which would continue to delight him forever. As it is wisely said, a thing of a beauty is a joy forever. Now the poet describes that daffodils provide him an everlasting pleasure, since after that moment, whenever he sits alone in his room with an idle and gloomy mood,
The beautiful scene of those numerous daffodils appears before his mind. His mind's eyes and his heart fills with immense joy, बेहद खुशी के साथ. In vacant or pensive mood, they flash upon inward eyes, which is the bliss of solitude. His heart dances with the daffodils. It is a great blessing for him in the hour of solitude. He feels that he is there in the joyful company of daffodils. The main theme of the poem is that objects of nature give double pleasure to man. Firstly, when he recalls them, sees them, and secondly, when he recalls them. The poet tells us that the memory of his captivating scene has become a permanent source of pleasure for him. As it is said, flowers are the real beauty of nature. But Lord did not put soul in them. But Lord did not put soul in them. लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें सिर्फ रूह नहीं भरी, बाकी वो जो है ना, जो है फितरत का खूबसूरत नज़ारा है, प्यारा है. Have a nice day. Goodbye. Allah Hafiz. AG Ahmad एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू.